I think audible, no? I think it is clear ना सायन, please confirm. आज का जो क्लास होगा ना वो जेट ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लास होगा आज का. Please continue. No, okay. Oh yeah, right. So good afternoon everyone. तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो द टॉपिक इज जेट ट्रांसफॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग बीटेक ई स्ट्रीम ई फॉर राइट. तो इलेक्ट्रिकल के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो शुरू करते हैं. जेट ट्रांसफॉर्म का जो टॉपिक है ना वो आज स्टार्ट करते हैं. This is a very important topic for third semester examinations, but topic is not too much large topic. This is very small topic, small. So I think this is very small topic. I, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने के पहले एक अनाउंसमेंट था. हमारा जो बीटेक का ट्यूशन है ना, बीटेक का अपकमिंग थर्ड सेमिस्टर, सेकेंड सेमिस्टर एंड फोर्थ सेमिस्टर का जो नया कोर्स आएंगे ना, अभी तो फर्स्ट सेमिस्टर एंड थर्ड सेमिस्टर चल रहा है. तो अपकमिंग जो सेमिस्टर आएगा दिस इज फोर्थ सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर. तो फोर्थ सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर का जो नया कोर्स हो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा. Course fee is very minimal. Course fee for second semester course fee is 1599
and fourth सेमिस्टर का कोर्स फी इज 1999. ओके, सो आप लोग जो जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है, हमारे से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से गाइडेंस के लिए, प्लीज कांटेक्ट विद दिस नंबर. आई थिंक नंबर इज नॉट हियर. सो 8584864783. This is our contact number. Please contact this number for all the details about the course, upcoming courses, fourth semester and second semester. We provide all the study materials and all the lecture notes as well as class note also. So, and suggestion, of course, this is main important things for B.Tech, right? तो आप लोग जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, प्लीज कांटेक्ट विद अस. ओके, चलो. तो आई थिंक जो जो स्टूडेंट हमारे साथ ट्यूशन ले रहा है ना, उसका मतलब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी टू लर्निंग, उसका सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार ना, वो इजी टू लर्निंग लेंगे. तो प्लीज जो जो स्टूडेंट अपकमिंग सेमिस्टर में चाहे अच्छे से गाइडेंस मिले, तो प्लीज कांटेक्ट विद अस. चलो, तो आज का टॉपिक है जेट ट्रांसफॉर्म. तो जेट ट्रांसफॉर्म का स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज सीक्वेंस, राइट? सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज सीक्वेंस. Sequence is a mapping, right? What is sequence? Sequence is a mapping. So what kinds of mapping? Mapping means some elements is there. Suppose there is some element which map to another elements, right? This is known as mapping. So here there is a ordered set x0, x1 up to xk, that is k plus 1 elements. Why k plus 1? This is starting from 0 and ending up to k. So this is 0 to k, that is k plus 1 element. So called finite sequence. There is a finite number of terms x0, x1, x2 dot dot xk. So this is the finite sequence. As there is a finite number of terms, that's why we call this is a finite sequence. Okay, हम finite sequence लिया, तो finite sequence का example क्या होगा? 2 to the power n equal to 0 to 6. This is a one small example finite sequence का, right? Okay, so if we take infinite sequence, then what is this? Suppose x0 is the first element, x1 is the second element, x2 is the third element, up to infinity. This is known as infinite sequence. All right. So we see we have seen the finite sequence and infinite sequence. So I think सबको clear है ना, finite sequence क्या है, infinite sequence क्या है, right? Okay, चलो. तो next, चलो next. So this is the example of infinite sequence. 2 to the power n equal to 0 to infinity. Here actually n कहां से कहां रन करता है, देखो. तो n 0 to infinity से n starting from 0 and ending for infinity. So that's why we can write is the infinite sequence. Why this is right one? That is first term is 2 to the power 0. That's why it's called 1. Okay, all right. And the order date of infinite set like is starting for minus infinity and ending to infinity. That's why in xn we can represent xn as a minus infinity to infinity. All right, this is two-sided infinite sequence. Okay, this is a very important term. First jet for jet transformation के लिए very important
की टूल सीक्वेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस. सो सीक्वेंस के लिए इतना ही काफी है. तो एंड नाउ वी कम टू द सीक्वेंस जनरेटेड बाय फंक्शन. हाउ can we generate a function? How can we generate a sequence by function? Okay, so a sequence generated by continuous time function safety uniform time interval t. So we can write this sequence f r t are equal to 0 to infinity. Okay, all right. This is very basic elementary thing. And some operations of sequence. This is very important. Proof is not needed, but property is important. That's why we recall the properties of some operations of sequence. Okay, so sum of the sequence. If I give you two sequence. Suppose xn is one sequence, yn is another sequence. Then sum we can represent as a sum of the sequences. Also, means xn plus yn we can represent as a sum of these sequence. That's all, right? So there is an example, small example. Suppose 2 to the power n run from 0 to infinity. Okay, and suppose I give you 6n, another term, n run from 0 to infinity. Okay, then we can represent as a 2 to the power n 6n n 0 to infinity. All right. Then there is another example also, right? So this is actually क्या है ना, sum of two sequence. Okay, तो हम सम ऑफ टू सीक्वेंस देख लिया. चलो आप मल्टीप्लिकेशन का बारी है. तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? सम ऑफ टू सीक्वेंस का मल्टीपल. तो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप होता है. एक टाइप होता एक्सएन इंटू वाइन, दोनों सीक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन किया. और एक टाइप होगा स्केलर, एनी स्केलर, सपोज सी बी एनी स्केलर. इफ वी मल्टीप्लाई सी विथ एक्सएन सीक्वेंस, then is the scalar multiplication with a sequence. Suppose we any scalar, suppose I give you a scalar c, right? C is any number, any real number. I give you any real number c. Okay, and if we multiply this c with any sequence xn, then we can write as a cxn. This is another sequence. কতক্ষণ হবে স্যার স্বর্ণেন্দু? হ্যাঁ, 1 ঘন্টা মতো চলবে. জেড ট্রান্সফরমেশনটা আজকে পুরোটা শেষ করবো সামনে. तो देख लो, हम पहले डिफाइन किया सीक्वेंस का डेफिनेशन एंड सीक्वेंस का एग्जांपल. इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल हम डिफाइन किया और फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल हम डिफाइन किया. और उसके साथ क्या डिफाइन किया? सीक्वेंस का एडिशन एंड सम मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ अ सीक्वेंस, राइट? नाउ जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सीक्वेंस. ओके, अभी तो हम जो चैप्टर पढ़ रहा है ना, उसका टाइटल क्या है? जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ अप्लाई होगा? सीक्वेंस के साथ अप्लाई होगा. इसीलिए सीक्वेंस थोड़ा बहुत, सीक्वेंस का डेफिनेशन एंड सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का एग्जांपल क्या है और सीक्वेंस का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ये जानना पड़ेगा. तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत डिफाइन कर रखा. मतलब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का एग्जांपल एंड सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, और सम ऑफ टू सीक्वेंस एंड सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंस, राइट? इसके बाद हम आ रहा है जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सीक्वेंस. ऑलराइट, so Z transformation of a sequence for what is this? So Z transformation of a sequence means xn n equal to 0 to k. Suppose I give you a finite sequence. मैं तुमको एक finite sequence दे दिया, ठीक है? तो फाइनाइट सीक्वेंस दे दिया मींस हम xn एक सीक्वेंस है, उसके साथ हम n इक्वल टू 0 टू k एक फाइनाइट नंबर दिया. देखो सीक्वेंस कितने कहां से कहां तक रन कर रहा है. सीक्वेंस n इक्वल टू 0 टू k तक जा रहा है ना. एंड xn इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी and xn n equal to minus infinity to infinity, right? So Z transformation of a sequence, we get three cases. First case finite case, second case infinite case, कहां से कहां तक? 0 से infinity तक. and third case क्या मिला? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक.
तो तीनों केस मिल गया ना। तो तीनों केस में क्या जेट ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या होगा, ये वाले चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन टॉपिक्स, मेन थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, राइट। तो दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैप्टर। हमको हम हमारे पास थ्री सीक्वेंस है, एक्सएम n इक्वल टू 0 टू एनी फाइनाइट केस, n इक्वल टू 0 टू एनी इनफाइनाइट नंबर एंड n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, राइट। वी हैव थ्री केस, these three cases, all right। We have these three cases and we can see the z transformation of these three cases. So first one is what? Z xn n equal to 0 to k. Then what is the result of this? Z n, suppose I give you a sequence xn, k n equal to 0 to k, then z of xn, this is a finite sequence, n equal to 0 to k. What is the result? Summation of n equal to 0 to k xn by z to the power n is known as capital Xz. This is a one-sided. Okay. This is very important result for, this is the first important result for Z transform of a sequence. All right, this is clear or not? Please comment. And say this is the second result, Z xn n equal to 0 to infinity. नेक्स्ट जो सीक्वेंस हम मिला वो सीक्वेंस क्या है, xn n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ऑल राइट। तो n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जो xn का सीक्वेंस है उसका जेड ट्रांसफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी xn by z to the power n, it is known as x capital Xz. This is also one sided z transformation. And third one is z of xn n equal to minus infinity to infinity. This is represent as a xn by z to the power n, summation of xn by z to the power n, summation run from minus infinity to infinity. This is known as xz. This is two sided. Clear Z transformation of a sequence. This is very important definition for Z transform of a sequence. Right? Where Z is a complex variable and the infinite series is convergent. Right? The infinite series. This is the infinite series, and these are the all the infinite series is convergent, and the region of the Z which is infinite series convergence is the Z का जो region है ना, which is a infinite series convergence is called region of convergence. Okay, I think all right. So this is the three important result. স্যার নিচেরটা टू साइडेड কেন? सी देखो क्या है ना, this is a real line, right? This is a real line. Suppose this is a real line. I give you a real line, right? So real lines जीरो, रियल लाइन का मिडिल पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा, राइट? जीरो का राइट साइड में क्या होगा, 1 2 अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एंड जीरो का लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, राइट? सो दिस जेड एक्स एन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज टू साइड। देखो जीरो का लेफ्ट साइड में एक माइनस इंफिनिटी टू जीरो, दिस इज वन साइड, एंड जीरो का राइट साइड में और एक जीरो टू इंफिनिटी, दिस इज अनदर साइड, दैट्स व्हाई दिस इज टू साइडेड। जीरो का लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और जीरो का राइट साइड में और एक पार्ट है, दैट्स व्हाई इट्स अ टू साइडेड, राइट? ऑल राइट। एंड देखो
First one is a zero. First one is a start from 0 to k. That's why this is one side. 0 to k. This is all n which lies on left side, right side of the zeros. Second one, this is start from also 0 to infinity tak. So these are all terms lies on left side, right side of the zero. But third one, this is not only right side, but also the left side is included. That's why it's called two-sided. Clear, Sion? And the region of Z is known as region of convergence. Okay, all right. This is not important things. So suppose I give you the question, find the Z transformation of the sequence n equal to 0 to infinity, then we can find, right? This range is very important, n equal to 0 to infinity, n equal to uh, minus infinity to infinity, n equal to 0 to. So this is the problem, sum of the infinite series. I think everybody know about the sum. What is the sum? Okay, so sum, limit sum is a what is the formula? This is summation of 2 j n equal to 0 to infinity 2 by z whole to the power n. So 2 by z whole to the power n we can represent as a n goes to infinity, summation of r goes to n minus n 2 by z whole to the power r, right? तो इसको लिमिट को रिप्रेजेंट कर लो ना तो हो जाएगा. दिस इज अ सीरीज का प्रॉपर्टी है ना. तो देखो मतलब क्या है लिखा, देखो लिमिट n कहां से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट लिमिट n गोस टू इंफिनिटी. ओके, तो r का टर्म क्या होगा, फाइनाइट टर्म. सो r गोस टू 0 टू n minus 1 2 by z whole to the power r. That's why 1 r, that's why we go take r goes to 0 to n minus 1 and 2 by z whole to the power r, right? तो आई थिंक इसका साम मिल गया. जो साम मिला मतलब जो सीरीज का साम होगा ना. देखो हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन से कहा आ गया, एक सीरीज में आ गया. देखो सीरीज का ये 2 बाई जेड एक टर्म है, उस टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू इंफिनिटी. दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज, राइट? दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज. सो इनफाइनाइट सीरीज का साम, वी फाइंड इनफाइनाइट सीरीज का साम. All right. So Z transformation of 2 to the power n equal to 0 to infinity is a Z by Z minus 2. I think the problem is clear now. This type of problem is very important. If you face any difficulty, please feel free to ask me. Okay. If you face any difficulty, then please ask me. I think this problem is very easy. Problem is clear. So we proceed further, right? Just calculate it. The series form GP series 1 minus r to the power n by 1 minus r, right? This is a normal GP series. Okay, all right. So z of 2 to the power n equal to 0 to infinity, the value is what? Z by z minus 2, and the region of convergence is mod z greater than equal to 2. If it's equal to 2, then the value is not defined. If z equal to 2, then denominator is 0. z equal to, for z equal to 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना. तो मतलब ये नॉट डिफाइंड. सो रीजन आउटसाइड में चल हो, रीजन आउटसाइड में आउटसाइड तक जाएगा ना, मतलब रीजन आउटसाइड में चला जाएगा. ठीक है, तो जेड मास भी 2 से बड़ा हो, मतलब 2 से बिगड़ होगा. मतलब जेड इक्वल टू 2 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना. तो 0 आ जाएगा तो रीजन आउटसाइड में चला जाएगा ना. रीजन go to outside the circle, region will go to the outside the circle, but
if mod z greater than 2, then of course region is inside the circle. I think clear to all, everyone. Please comment. And sometime we call xz equal to z minus z by z minus 2 is called generating function of 2 to the power n. And provide z lies outside of the circle, mod z equal to 2 के लिए ये outside में जाएगा ना, इसीलिए this is the z lies outside the circle, mod z equal to 2. That's why this is mentioned. Okay, this is not very important, but नेक्स्ट इसके बाद क्या है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म. So properties of Z transform. What is the properties of Z transform? First property, sum of the sequence क्या होगा, Z of sum of the sequence. In xn is a one sequence, yn is a another sequence, two sequence is there. Then Z of xn plus yn, right? This is the two sequence. Okay, all right. So sum होगा क्या होगा ना, Z of xn plus Z of yn. This is the representation. Okay, this proof is not needed, तो result का जरूरत है, proof का जरूरत नहीं है. And xn is another sequence, then scalar multiplication of this sequence का z transformation क्या होगा, same type से c बाहर आ जाएगा and c of z of xn. Okay, all right. And this is the very important problem, an engineering problem. In an engineering problem, aft equal to xt equal to ft equal to cos omega t ht is a continuous time function which generate a sequence of signal cos n omega t n equal to 0 to infinity at interval t. Find the z transformation of the sequence, right? This is a little bit lengthy problem, but still this is a very important problem, right? तो फर्स्ट क्या होगा ना, देखो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ सिग्नल दिया ना cos n omega t which is lies on n equal to 0 to which lies on n equal to 0 to infinity. Okay, first see the case. First see the case cos n omega t, right, which lies on what, 0 to infinity. So we take this type of form, means we take second type of Z transform, right? Second type of one-sided Z transform, that is Z of cos n omega t, n equal to 0 to infinity. Then what is the using this property, what we can write, n equal to 0 to infinity cos of n omega t by z to the power n, right? Okay. So e to the power n omega t equal to cos from n omega t plus I sin n omega t, and e to the power minus I omega t is a cos n omega t minus I sin n omega t, right? तो देखो इसको साम करके क्या मिलेगा, cos n omega t equal to e to the power I n omega t plus e to the power minus I n omega t by 2. This is a part of a mathematics for simplification of the calculation. That's why we do this simply step, right? So cos omega t का वैल्यू क्या हो गया, e to the power I n omega t plus e to the power minus I n omega t by 2. This is the simplest value of the cos n omega t. All right, then in place of cos n omega t we write this, because for cos n omega t का वैल्यू क्या मिला, e to the power I n omega t plus e to the power minus I n omega t by 2. This we get this value. So z of cos n omega t equal to, we can write cos n omega t का value, here we put the cos n omega t का value, put कर दिया,
then we use the summation. Okay, so half बाहर आ गया, half is a constant ना, so half बाहर आ गया, then this is individually sum, we break it in individual sum. So first one is a z e to the power I n omega t, and second one is a z e to the power minus I n omega t, right? So e to the power I n omega t equal z. Now z of e to the power I n omega t is what? Summation of n equal to 0 to infinity e to the power I n omega t by 2. And a वाले sorry, z to the power n, sorry 2 और z to the power n, right? ये वाले सम क्या होगा ना, ये वाले सम वैलिड तब होगा जब इसका वैल्यू जे e to the power I omega t by z लेस देन 1 होगा, राइट? सो e to the power I omega t by z इसको ब्रेक कर दिया, मतलब रूल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जय हिंद सैद जी, ओके। सो इसके बाद क्या होगा, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा ना, सो z of e to the power it, using GP series, we get the value of z of e to the power I n omega t, and using this GP series, just we replace e to the power minus I n omega t. E to the power I n omega, z of e to the power I n omega t equal to z by z minus I e to the power I omega t. But z of e to the power minus I omega t is what? Z by z minus e to the power I minus I omega. So using this result, we get z of cos omega t. Just put the value, right? Put the value is what? In this equation. And we get the value z of e to the power I n omega t, and we get the value z of e to the power minus I. Then we put the value in this equation, we get the result. So this is a one type of problem. So this problem is little bit important problem. Okay. So please carefully check the problem, pause, review, and proceed the problem. Very carefully analyze the problem, check the problem in every step, सारे स्टेप चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताना, कमेंट में बता सकता हूँ, बट एनी एनी प्लेस, हमारा ग्रुप में है, कमेंट बॉक्स है, सारे प्लेस है, तो अच्छे से चेक कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज इन्फॉर्म अस। This is the one type of problem of jet transformation. This is the type 1 problem, right? So this type of problem little bit larger problem, but still problem is very easy. तो एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, ओ नेक्स्ट प्रॉब्लम के पहले एक छोटा थ्योरी है, तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मींस shifting with some positive integer, right? Suppose z equal to x n minus n0, then we can represent as 1 by z to the power n0, z of xn, right? It's called n0 is called the number of step in a delay, right? This is a shifting property, fast shifting property of z transformation, right? Delayed version of sequence, right? Proof is not needed, proof का जरूरत नहीं है, just result को recall कर लेना, ठीक है? एक बार अच्छे से रिजल्ट को रीड कर लेना, रिकॉल कर लेना, ठीक है? उसका प्रूफ का जरूरत नहीं है, ओके? उसके बाद जो एग्जांपल दिया ना, फाइंड द सीक्वेंस xn where xn equal to 1 by 3 to the power n, find the delayed sequence of xn minus 3, right? So first n equal to 0 to infinity, so second type of jet ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम जो दिया था ना xn का वैल्यू वो यूज करेंगे, ठीक है? xn का वैल्यू क्या दिया, 1 by 3 to the power n, वो यूज कर दिया, देखो मतलब ये वाले फॉर्मूला से आया, उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया, नहीं प्रॉपर्टी मींस ना नहीं गिवन डाटा जो है ना xn का वो यूज कर लिया, तो उसके बाद हम मिल गया आंसर, एंड ऑल्सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया ना।
रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस मिलना बहुत इजी बात है, मतलब ये जेड को वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कहाँ डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। जिस पॉइंट में डिनोमिनेटर आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा, उस पॉइंट में वो सर्कल के आउटसाइड माने रीजियन का आउटसाइड में चला जाएगा। उसके मतलब जिस उसका कोई बिगर पॉइंट के लिए वो रीजियन के अंदर रहेगा, राइट। सो रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस इज दैट्स व्हाई द mod z greater than 1/3। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ना। देखो जेड ऑफ एक्स एन माइनस थ्री मिला, क्या मिला, जेड ऑफ एक्स एन माइनस थ्री होल एन, उसका वैल्यू क्या मिला। दिस इज बेसिक कैलकुलेशन, we do not explain the calculation, right? This is the normal geometric series. So what is the value after getting the after doing the calculation? We get the value 3 by z square 3z minus 1. Okay, suppose we put z equal to 1 by 3, then what will happen, j 3 by z square into 0. So denominator में 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो प्रॉब्लम होगा। डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। So this function is not defined. So z lies outside the circle at mod z equal to 1 by 3. Mod z equal to, if we put mod z equal to 1 by 3, then denominator is 0. So this is not defined. So point valid when? जब ये z का वैल्यू ना mod z का वैल्यू 1 by 3 से बड़ा होगा, mod z का वैल्यू 1 by 3 से लार्जर होगा। दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस व्हेन mod z। एंड सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगा ना, जेड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जेड जेड ऑफ जेड एक्सएन माइनस जेड एक्सएन जे एक्सएन प्लस वन इज अ सिंगल स्टेप एडवांस ऑफ एक्सएन, राइट। दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जस्ट रिकॉल द प्रॉपर्टी एंड एक बार रीड कर लेना, प्रूफ का जरूरत नहीं है, आपका इतना ही काफी है। ऐसे करके हम एक बार देख लेते हैं एन स्टेप, एन जीरो स्टेप एडवांस वर्जन ऑफ द सीक्वेंस। दिस इज फॉर डबल स्टेप एडवांस वी कैन राइट दिस इज द रिजल्ट। जस्ट एक बार रिकॉल कर लें, ठीक है। एंड दिस इज the problem, the sequence given, right? Determine the z transform, determine the z transform. Determine the Z transform of the four-step advanced version of the sequence. This is the sequence 1 by 3 to the power n plus 4 n equal to 0 to infinity. Then find the Z of this. No? Okay. This is the normal result, normal problem. I think you all understand, right? What is the range? Z transformation का range क्या होगा ना? As advanced versions of sequence दे दिया n equal to 0 to infinity. So that's why we use the advanced versions formula like this formula. Okay. Like we use this formula. This is the n0 advanced step के लिए. We use this formula. All right. तो ये वाले प्रूफ का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाले प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड दिस प्रूफ इज आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, दिस प्रूफ इज आल्सो नॉट। ये तीनों जो प्रूफ है ना, कोई प्रूफ मतलब याद रखने का जरूरत नहीं है। जस्ट रिजल्ट को अच्छे से रीड कर लेना एंड रिकॉल कर लेना, ठीक है। Okay, then change of scale. This is the damping rule, right? Then this is the properties of Z transform for a constant A. Z of A to the power n x n we can write as a x of Z by A, right? And for this property is very useful, right? If Z of x n, Z of x n, Z means Z transformation. Z of x n
sequence का z transformation, suppose we assume x of z, right? Then we can use this property, and we can see the property of z transformation, z of a to the power n xn is a x of z by a. Okay, and प्रॉपर्टी टू, तो दिस इज अ स्मॉल प्रॉपर्टी, एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। देखो ये फाइनाइट सीक्वेंस के लिए हम फाइनाइट जेट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वन साइडेड n इक्वल टू सम एनी फाइनाइट नंबर, इसके लिए हम फॉर्मूला ऐसे लिखा। एंड another property, any constant n z of a to the power minus n xn we can represent as a x of az, right? And another property, multiplication of n, right? Z of xn equal to xz, then we can represent as a z of nxn equal to minus xz. This is another property, right? इसका प्रूफ भी जरूरत नहीं है, जस्ट इसका रिजल्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन के लिए कहा एन मल्टीप्लिकेशन हुआ, सीक्वेंस के साथ एन का मल्टीप्लिकेशन हुआ। देखो ये वाले टर्म अच्छे से देखो, सीक्वेंस के साथ हम जेड का मल्टीप्लिकेशन लिया ना, देखो जेड ऑफ एन एक्स एन, राइट? सीक्वेंस के साथ हम एक कांस्टेंट एन मल्टीप्लाई कर लिया, राइट? तो उसके बाद क्या मिला, उसके बाद मिला माइनस जेड डी एक्स जेड। ऑल राइट, दिस इज माई फॉर मल्टीप्लिकेशन एन के लिए क्या प्रॉपर्टी है जेड ट्रांसफॉर्मेशन का, वो देख लिया। सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्मेशन का क्या प्रॉपर्टी, और फर्स्ट में क्या प्रॉपर्टी देखा, फॉर ए कांस्टेंट ए जेड ऑफ एक्स टू द पावर ए टू द पावर एन एक्स एन का प्रॉपर्टी देखा, राइट? और उसके बाद क्या देखा, जेड जेड ऑफ ए टू द पावर माइनस एन एक्स एन का और एक प्रॉपर्टी, राइट? क्लियर? ओके, ऑल राइट। ये वाले सारे चीज का मतलब जरूरत नहीं है ना। Now initial value theorem. Suppose limit z tends to infinity xz equal to x0. Xz is a generic function of xn, right? Then this is known as initial value theorem. Suppose z infinity तक जा रहा है ना, उसके लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, एक जीरो होगा, तो इसको क्या कहता है, इनिशियल वैल्यू। तो लिमिट जेड व्हेन जेड गोस टू इंफिनिटी, उसके लिए एक्स जेड क्या होगा, एक्स जीरो हो जाएगा ना। तो ये दिस इज द इनिशियल, राइट? एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड इंटेंस टू इंफिनिटी एक्सटेंड इक्वल टू क्या होगा, z tends to 1 z minus 1 etc, right? This is the final value theorem. All the result is important but all the proof is not important. proof का कोई जरूरत नहीं है, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम का ओनली रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। रिजल्ट को याद करके जाना, प्रॉब्लम आएगा इससे से। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट, प्रूफ का जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। एंड जेड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म फॉर स्टैंडर्ड सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक्स एन एक फर्स्ट टर्म इज वन एंड अदर टर्म्स इज जीरो 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 जीरो, देन इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एन इज वन होगा, ठीक है। एक्स एन का मतलब ये स्पेशल टाइप ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स एन इक्वल टू सपोज 5 कांस्टेंट सीक्वेंस, जस्ट अ मिनट।
तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन का कोई कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट? तो एक बार देख लेना। इफ एक्सएन एक सीक्वेंस है, एक्सएन का क्या होगा ना, एक्सएन 1 0 0 0, फर्स्ट टर्म इज 1, ऑल टर्म अदर ऑल टर्म इज 0, देन जेड ऑफ एक्सएन इज 1। सेकंड, xn is 1 1 1 1 1, this is constant sequence, then z of xn is z by z minus 1, and z of a to the power n, that is n, this is z by z minus a, the region is mod z greater than mod a. All the standard form, please read all the form carefully, ठीक है? सारे फॉर्म अच्छे से रीड करके जाना, हाँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्म। एक्सएन का फॉर्म ये, इस फॉर्म में जेड ऑफ एक्सएन क्या होगा, एक्सएन का इस फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या होगा, और इस फॉर्म में क्या होगा, एन इस फॉर्म में क्या होगा, ठीक है? एंड जेड ऑफ e टू दी पावर n माइनस 1 ये फॉर्म में क्या होगा, जेड ऑफ e टू दी पावर माइनस एन टी ये वाले फॉर्म में क्या होगा, ठीक है? जेड ऑफ कॉस एन ओमेगा टी इस फॉर्म में क्या होगा, है ना? और साइन एन ओमेगा टी इस फॉर्म में क्या होगा, और मॉड जेड ग्रेटर देन 1, मॉड जेड ग्रेटर देन 1, मॉड जेड ग्रेटर देन e टू दी पावर माइनस 3, मॉड जेड ग्रेटर देन ए, राइट? सारे फॉर्म डिस्कस कर दिया, ठीक है? प्रूफ का इतना जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बार जस्ट देख, मतलब प्रूफ का जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक बार रिकॉल करके जा सकते हैं, मतलब वन प्रूफ इज वेरी शॉर्ट प्रूफ, सो वन एक बार देख सकता है। देखो एक बार जस्ट using our formula, right? Finite z transformation, that is xn, z of xn का जो finite form है ना, z of xn का जो n equal to 0 to k, that is n equal to any k, मतलब z of xn पर k, ये तो फाइनाइट जेड ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो फॉर्म है ना, एक बार देख के जाना, ठीक है? तो उस फॉर्म से ही ये प्रूफ हो जाएगा। तो एक वाले प्रूफ और दो वाले जो प्रूफ है ना, एक बार देख सकते हैं, ठीक है? दिस इज वेरी इजी प्रूफ, सो आई थिंक दिस इज नॉट हार्ड, ओके? सो एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है? एंड थ्री वाले प्रूफ भी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रूफ का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बट प्रूफ भी बहुत इजी है, तो एक बार अच्छे से देख लेना। जेड ऑफ ए टू दी पावर एन बोले इसे जेड बाय जेड माइनस ए, राइट? सो जेड ऑफ एन का क्या होगा, ठीक है? एंड उसके जेड ऑफ एन से आएगा जेड ऑफ एन ए टू दी पावर एन माइनस 1, राइट? एंड उसके बाद 6 जेड ऑफ e to the power minus nt क्या होगा? Then this is the very important example. Find the z transformation of this sequence, right? एक particular sequence दे दिया, उसका z transformation find करने के लिए दिया। देखो ये वाले sequence क्या होगा, infinite sequence दे दिया, n equal to 0 to infinity, तो summation of z to the power n by जो फॉर्मूला है ना n equal to 0 to infinity का, देखो देखो z इक्वल टू एन, जेड एक्स एन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी का जो फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला हम यूज कर दिया, ठीक है? तो उस फॉर्मूला से ही हम मिल गया माइनस हाफ हाफ माइनस 1/2 होल टू द पावर n का वैल्यू। दिस इज अ फाइनाइट मतलब सीरीज ना, तो सीरीज का सम क्या होगा ना, मतलब z बाई z माइनस हाफ दैट इज प्लस हाफ, राइट? दिस इज बेसिक elementary result. And find the z transformation of the sequence. This is a finite infinite sequence, ठीक है? ठीक है, देखो 0 2 4 6 8 ऐसे जा रहा है, मतलब 2n
ऑर्डर से जा रहा है ये वाले सीक्वेंस, राइट, एंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। एंड अनदर एग्जांपल क्या है ना, जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सीक्वेंस दिस, ओके। दिस इज these 3-4 problems are very important problems, so एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। दिस इज वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम, आई थिंक यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व इजीली। एग्जांपल 4 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 5 भी इंपॉर्टेंट है, ओके। एग्जाम्पल 5, दिस इज अनदर स्मॉल प्रॉब्लम, फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड द सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए बोला है y आर इक्वल टू 0 एंड y आर इक्वल टू x आर माइनस 3, राइट, एंड x आर डिफाइन कर दिया, ओके, 1/2 टू द पावर यूजिंग फास्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जस्ट फाइंड द z ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो ये वाले सेम सेम मेथड सेम, राइट, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेंशन द रीजन ऑफ वैलिडिटी, कौन सा रीजन में ये वाले सीक्वेंस वैलिड होगा, मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। देखो सीक्वेंस जेड ट्रांसफॉर्मेशन का जब वैल्यू आएगा ना, तब वो वैल्यू से ही अब मतलब देख जाएगा कहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम बहुत कठिन नहीं है ना। So find, this is another z of 1 by n factorial. This is a sequence, right? कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to infinity तक। So and again same problem, and find the z n square by z n factorial. Okay, all right. So this is the all about the problem. I think this is enough, and there is more problem. More 3 to problem is also included, right. This is another important problem, Zn is a UZ, then prove that. This is a short problem, but this is important, okay. This is important problem, and another important problem क्या है ना, another important problem, if t equal to e to the power 40 uniform interval t, then find the z transformation। मतलब मेथड सेम है, वो जो फास्ट 3 फॉर्मूला और शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला मिला ना, उस फॉर्मूला से ही हो जाएगा। एंड ये वाले प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power minus n sin n theta, right, another important, okay। And this is also important problem, find the z transformation of 1 by n factorial का सॉल्व किया ना, उसी तरह 1 by n plus 3 factorial भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। So this is the some important problem of Z transformation. Now come to the inverse Z transformation. Okay. So inverse Z transformation में क्या क्या चीज है, एक बार अच्छे से देख लेना। देखो इनवर्स Z ट्रांसफॉर्मेशन में थ्योरी में तो ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है। इनवर्स Z ट्रांसफॉर्मेशन तो में ज्यादा चीज तो नहीं है। देखो Z ऑफ एक्स एन इक्वल टू एक्स जेड, हाँ, एंड इनवर्स Z ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, the inverse Z transformation of xz is xn, like symbolically we can represent। हम क्या क्या देखा, मतलब हम पिछला चैप्टर में जो जो चीज देखा ना, जेड ऑफ समथिंग फाइंड करना, तो इधर फाइंड करूंगा जेड इनवर्स एक्स ऑफ एक्स लाइक दैट, ओके। जेड इनवर्स समथिंग फाइंड करूं, ठीक है। तो दिस इज द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जेड ऑफ ए टू दी पावर एन क्या होगा, वहां जेड बाय जेड माइनस ए, राइट। तो जेड इनवर्स ऑफ समथिंग क्या होगा, मतलब जेड इधर आ जाएगा तो जेड इनवर्स हो जाएगा,
z inverse of z by m z minus a. This is a to the power n, right? Okay, ठीक है, ठीक है, चलो। तो लिनियरिटी ऑफ द जेड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन का लिनियरिटी का प्रॉपर्टी क्या होगा? जेड इनवर्स एक्स जेड प्लस वाई जेड वी कैन रिप्रेजेंट एज ए जेड इनवर्स एक्स जेड प्लस जेड इनवर्स वाई जेड। सेकंड, जेड इनवर्स एक्स जेड वी कैन रिप्रेजेंट एज ए जेड इनवर्स एक्स जेड। ऑलराइट, ठीक है ना? तो इनवर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन जेड इनवर्स 1 इज 0 1 0 0 0 0 अप टू इंफिनिटी। जेड इनवर्स जेड इनवर्स एक्स एन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी क्या था पिछले चैप्टर में हम देखा? जेड इनवर्स एक्स एन 0 टू इंफिनिटी क्या था ना? एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड बाय जेड माइनस 1 था। तो जेड इनवर्स जेड बाय जेड माइनस 1 वो एक्स एन हो जाएगा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। जस्ट प्रीवियस चैप्टर का इनवर्स पार्ट दिखाई दे रहा है इधर, राइट? जो पिछला चैप्टर में स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसका इनवर्स यहाँ मिलेगा। Similarly, z inverse z by z minus n, this is a to the power. Z inverse z by z minus cos, this is n. Z inverse z by z minus s cos, there is n a to the power n minus 1. And this is z inverse z by e to the power minus t, this is e to the power minus nt. And z inverse 1 by z minus a, this is z inverse 1 by z into z minus. And another result, z inverse xz equal to xn. N equal to 0 to infinity and z inverse yz, z equal to y, n equal to 0 to infinity, then z inverse xz yz we can represent as a xn n equal to 0 to infinity and yn n equal to 0. This is the reason. Okay, proof is not needed anyone. ठीक है? तो प्रूफ एक भी प्रॉपर्टी के लिए प्रूफ का जरूरत नहीं है। तो सारे प्रॉपर्टी को आपको याद करके जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड पिछले चैप्टर में जो जेट ट्रांसफॉर्मेशन में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था ना वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग थर्ड सेमिस्टर एग्जामिनेशन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो देखो, ये वाले प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इनवर्स ऑफ जेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन दिस एंड फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। ये वाले टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक टाइप है ये जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। और जेड इनवर्स फाइंड करने का जो प्रॉब्लम है ना, जेड इनवर्स फाइंड जेड इनवर्स, ये वाले टाइप का प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। थ्री टाइप का प्रॉब्लम है इस चैप्टर में। and this is find the jet inverse jet transformation. This is the important problem of course. And another important problem for this chapter, using jet transformation solve the differential equation. ये वाले और एक टाइप है for this chapter. Okay, so this is all about the jet transformation and inverse jet transformation. Okay, so jet inverse jet transformation में हम थ्री टाइप का प्रॉब्लम देखा। क्या क्या प्रॉब्लम देखा और एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। चलो जस्ट अ मिनट। तो हम तीन टाइप का प्रॉब्लम देखा ना इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्मेशन में।
हम तीनों प्रॉब्लम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखा। फर्स्ट वन क्या है था, फर्स्ट वन ये वाले प्रॉब्लम देखा, फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, ये वाले प्रॉब्लम देखा, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, right? Inverse z transform of the any type of function, so say 2z square plus 2z square plus 3z by z plus 2 into z minus 4, ये वाले एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखा। फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना बहुत इजी है। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम का इनवर्स जेड फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन। उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा वो भी फाइंड कर सकता है, राइट। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन, तो ये वाले प्रॉब्लम ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, तो दिस इज one type of problem and another represent same problem another way। प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसका रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, ऐसे करके दे सकता है 2z+1 बाई z+1 इंटू z-3, ऐसे करके दे सकता है। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन, राइट। फाइंड द z इनवर्स, राइट। इन दिस वे you can arise the question in exam, okay। And another one is the using z transformation solve the differential equation, okay। This is the very important another type of question, using z transform solve the differential equation. Suppose I give you xn plus 2 plus 4xn plus 1 plus 3xn equal to 3 to the power n, where xn equal to x0 equal to 0 and x1 equal to 1. Suppose I give you this problem, right? Then what will happen? देखो क्या होगा ना, मतलब इस ये वाले प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम कर फर्स्ट एज्यूम करना है z of xn equal to xz, okay। So by shifting properties of advanced version we can get by shifting। So first सारे प्रॉपर्टी और सारे रिजल्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सी ऑल द रिजल्ट ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। देखो जेड ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट और प्रॉपर्टी के बिना एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाऊंगा आप, ठीक है। तो बी केयरफुल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन। So by shifting property, property क्या property using advanced version, advanced version you can write as a z of xn plus 1 equal to z of xn minus z of x0, all right। This we can represent as a z of xz, যেহেতু x0 there as x0 equal to 0,
That's why we can write these in this way. Okay. For double step advance, we already discussed in the class in details, right? We already solved this type of problem in our regular class. We solved very details. We solved the problem very detail in okay. चलो तो हम जो रेगुलर क्लास किया ना, तो वो रेगुलर क्लास में इन डिटेल्स हम ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। हाँ, तो अच्छे से एक बार मतलब जो हमारा पेड स्टूडेंट है, अच्छे से हमारा जो ऐप में ये सारे वीडियो है ना जेट ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये हम तो शायद ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके एडवांस वर्जन हम लिख दिया, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडवांस वर्जन वी गेट दिस। तो हम शायद ये जो रेगुलर क्लास में शायद मेंशन किया, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कैसे ये जेड एक्स एन प्लस वन आया, राइट। देन डबल स्टेप में क्या होगा, डबल स्टेप एडवांस में क्या होगा, मतलब इस यूजिंग जस्ट ये इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्मेशन का ये स्टेप है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, मतलब सॉल्व करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। तो जेड ऑफ एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जेड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस जेड एक्स वन, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड ऑफ एक्स जेड, ऑल राइट ना, माइनस जेड, दिस इज जेड स्क्वायर कैपिटल एक्स जेड माइनस जेड, ठीक है ना। तो यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्मेशन, taking Z transformation, taking Z transform on both sides. Suppose we take Z transform on both sides, then we get what is my differential equation? This is my equation. We take Z transformation on both sides, Z transform on both sides, right? So we can write Z of x n plus 2 using the property, right? Z of x n plus 2 plus 4z xn plus 1 प्लस, मतलब ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन का जेड में मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस 3z xn, राइट, इक्वल टू जेड ऑफ 3 to the power n. I think clear to all. Then after that just solve these using the formula z of xn plus 2 and using the formula z of xn plus 1 and using the formula zxn. We get the value of xz. First we get the value of xz, then just using normal solving of xz, we get the inverse z transformation of xn, right? Inverse z transformation of xn, that is z inverse. Clear to all? So in this way we solve the problem. So this is all about the z transformation and inverse z transformation. हमारा जो रेगुलर क्लास था उस क्लास में हम बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया, तो और मतलब इन डिटेल्स थ्योरी भी डिस्कस किया, बट दिस इज द सजेशन सेशन। तो सजेशन सेशन में हम जो जो टाइप का प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर दिया, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन में दिक्कत होगा और उसका सॉल्व करने के टाइम कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट करना। और हमारा जो इजी टू लर्निंग का ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मेंशन मतलब आप पोस्ट कर सकते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम में सॉल्व करने में मतलब
सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा स्टेप फॉलो करो वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम मतलब आप लोगों का अ, मतलब हेल्प करने के लिए मतलब रेडी है। तो आप अच्छे से जो जो मतलब ये जेट ट्रांसफॉर्मेशन से जो जो जेट ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरी है ना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके बाद जेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ने के बाद ही प्रॉब्लम पे आना, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बट वो प्रॉब्लम के पहले जेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो सारे प्रॉपर्टी है ना, वो अच्छे से मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब वो उस प्रॉपर्टी के बिना, वो वाला फॉर्मूला के बिना आप जेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ पाओगे। मतलब वो जेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो सारे प्रॉब्लम है ना, वो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको जेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो जो बेसिक एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज है, देखो जेट ट्रांसफॉर्मेशन का ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है जेट ट्रांसफॉर्मेशन में। उसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला है, एज ए फॉर्मूला उसको आपको याद रखना है। लाइक जेड ऑफ एक्सएन क्या होगा, जेड ऑफ एक्सएन दिस फॉर्म में क्या होगा, दिस फॉर्म में क्या होगा, लाइक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम याद रखते हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखते हैं, उसी तरह जेड ट्रांसफॉर्मेशन का जो सारे फॉर्मूला है ना, उसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद वो फॉर्मूला को हम प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, बस दैट्स ऑल। जेट ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, एंड जेट ट्रांसफॉर्मेशन is not more important topic for your upcoming third semester examination. Still, first important topic is your numerical analysis, second important topic is your for electrical stream के लिए हम बोल रहा है, first important topic is your numerical analysis, second important topic is your uh, uh, क्या है ना प्रोबेबिलिटी, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर जेट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो जेट ट्रांसफॉर्म के लिए हाँ अच्छे से वो जो फॉर्मूला है, मतलब प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद ये लिटिल जो सारे छोटा छोटा प्रॉब्लम है ना, वो एक बार सॉल्व कर लेना। मतलब हम जो जो प्रॉब्लम आपको मेंशन किया ना, ये वाले प्रॉब्लम कर लेंगे तो हो जाएगा। उससे ज्यादा प्रॉब्लम करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आपको यही बताना चाहता हूँ, आपका तो सेकंड सेम शायद हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट सेम और थर्ड सेम शायद इस मार्च के अंदर ही हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड सेम और फोर्थ सेम स्टार्ट होगा अप्रैल से। तो क्लास तो शायद अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा, बट उसका जो मतलब प्रिपरेशन फोर्थ सेम और सेकेंड सेम का जो संग्राम, वो उस संग्राम स्टार्ट होगा, मतलब उसका जो सारे प्रिपरेशन है ना, वो स्टार्ट होगा शायद अप्रैल से। आप लोग अप्रैल से ही नया सेमेस्टर का मतलब जो सारे पेपर है उसका पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो शायद उसके लिए आपका ट्यूशन हो तो बहुत अच्छा होगा। शायद आपका एक भी ट्यूशन तो जो चाहिए ना, गाइडेंस के लिए तो ट्यूशन चाहिए। जो को क्या 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 पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो ये सारे गाइडेंस के लिए थोड़ा बहुत तो ट्यूशन का तो जरूरत होगा ही ना। तो इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब हमारा जो इजी टू लर्निंग है उसके साथ जुड़िए। फोर्थ सेमिस्टर के लिए हमारा फीस है 1999, एंड फिफ्थ सेमिस्टर के सॉरी सॉरी सेकेंड सेमिस्टर के लिए हमारा फीस है 1599। दिस इज फॉर दिस इज फॉर आवर फोर्थ सेम, एंड दिस इज फॉर सेकेंड सेम। तो फर्स्ट सेम का जो सारे स्टूडेंट है उसको यही कहना चाहता हूँ, अ, आप सेकेंड सेम फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में गाइडेंस अच्छा अच्छी तरह गाइडेंस चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए। हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, और लेक्चर नोट भी प्रोवाइड करेंगे, और वीडियो क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा इजी टू लर्निंग ऐप के थ्रू। एंड उसके बाद जो सिलेबस फिनिश होने के बाद आपको सजेशन भी मिल जाएगा।
तो इसीलिए कंप्लीट गाइडेंस के लिए इजी टू लर्निंग के साथ जुड़िए। हमारा क्लास स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 1/4/2026 1 अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। तो यही बताना चाहता हूँ। अम, अ, जो सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेम और थर्ड सेम में पिछले टाइम हमारे साथ नहीं जुड़ा था, तो अभी रियलाइज हो रहा है प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं हुआ, प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मतलब सेम मिस्टेक मत करिए भाई। तो मिस्टेक एक बार मिस्टेक मतलब आदमी एक ही बार मिस्टेक करता है ना, तो अगले टाइम मतलब ये गाइडेंस के लिए मतलब कोई मिस्टेक कर मतलब मत करिए। तो देखो फीस तो ज्यादा नहीं है, 1999 एंड 1599। आपका मतलब एक रेस्टोरेंट का मतलब फ्रेंड के साथ एक बार रेस्टोरेंट जाएगा तो ये वाले फीस मतलब ये वाले मानिए आपका एक बार रेस्टोरेंट का खाना पीना के मतलब रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट के लिए ही हो जाएगा ना। मतलब रेस्टोरेंट में सारे फ्रेंड जब मतलब रेस्टोरेंट का बिल सारे फ्रेंड जब रेस्टोरेंट में सॉरी मेरा साउंड ठीक सॉरी हाँ यही बोल रहा है सारे फ्रेंड जब रेस्टोरेंट में जाता है ना, तो रेस्टोरेंट का बिल ही इतना आता है ना, तो 199 बिल रेस्टोरेंट का बिल हो जाता है, 1599 तो उसके ज्यादा ही रेस्टोरेंट का बिल आता है। तो फीस बहुत कम है, ये 6 मंथ का फीस है, ठीक है। तो ये 6 मंथ के लिए ये फीस से कोई आप मतलब अदर्स कोई इंस्टीट्यूशन इस फीस में मतलब आपको गाइडेंस नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको यही बोल रहा है ज्वाइन कर सकता है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है मतलब फॉर ऑल द डिटेल्स आप इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए 85848647। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो जेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्लास था आज वो हम फिनिश कर चुका। सारे प्रॉपर्टीज रिकॉल कर दिया और जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है हम बोल दिया। चलो, नेक्स्ट हम मिलते हैं आपका जो इलेक्ट्रिकल का जो टॉपिक है ना न्यूमेरिकल एनालिसिस उसके साथ, ठीक है। चलो आज के लिए क्लास खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे, उसका सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसका जो सारे थ्योरम भी है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।